करते हैं we want to discuss judicial reform. Access to justice का मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको एक्सेस जस्टिस का मिलना चाहिए। जो कोर्ट्स में केसेस वो बहुत डिले होते हैं, आपने तो बहुत फेमस सुना ही है, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग, वो यहाँ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के सेशन में मैं अभी बात कर रहा था इंदिरा के साथ पहले ही कि हम नहीं दोबारा बोलने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो अगर आप चीफ जस्टिस से सुनेंगे, जो पुराने चीफ जस्टिस रहे हैं, जितने भी नालसा के चीफ हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, वो सब बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आज तक कोई इतना स्मार्ट सोल्यूशन लेके नहीं आया कि प्रॉब्लम तो है, तो व्हाट्स द सोल्यूशन क्या है। तो हमारा मानना है कि ये मेरा पर्टिकुलर मानना है कि ये गवर्नमेंट या जुडिशरी अकेले ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो जो मेरी बात होगी यहाँ अभी सब स्पीकर्स, तो मैं बताऊंगा हम लोग ने क्या किया है। तो हम लोग कौन है? हम लोग एक फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस के नाम से है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ये करीब 100 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, 250 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंस है हिंदुस्तान में। ग्रास रूट्स प्रेजेंस है, ये कोई हाई फाई वाला लेवल सेमिनार वाला सोसाइटी नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर रूरल एंड मोस्ट ऑफ देम वर्क इन द ग्रास रूट्स। और उनका 2 फंक्शन है, एक तो वो अवेयरनेस एंड कैंपेन कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म के, और दूसरा जो गरीब लोग हैं उनके अगल बगल में उनको एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए। तो फेडरेशन को 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फेडरेशन का। एक तो एक्सेस टू जस्टिस, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, तो प्रायोरिटी है, और दूसरा जो है अवेयरनेस एंड कैंपेन। तो हमारे फेडरेशन के साथ फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, जिनके चेयरपर्सन साथ यहाँ बैठे हुए हैं भगवानजी रियानी, तो इनका काम बहुत सालों से जुडिशियल रिफॉर्म पे हुआ है। तो इन्होंने भी नेशन वाइड एक्सेस जो अवेयरनेस क्रिएट किया है इस मुद्दे पर, और इस पर पेटिशन भी आया है, PILs भी आया है, तो खुद ही बताएंगे। मैं भी 2 मिनट में इनके हाथ में माइक दे दूँगा। तो आप समझ लीजिए दोनों एस्पेक्ट्स पे हम आज बात करेंगे। एक तो जुडिशियल रिफॉर्म पे, ये तारीख पे फास्टर जस्टिस कैसे मिला, और दूसरा जो गरीब हैं, जो उनके पास मुकस्सिद हैं, दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनको एक्सेस नहीं है जस्टिस को, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास भी ये दोनों चीज़ों पर बात करते रहते हैं, लेकिन सोल्यूशन आज तक जंग्स के नहीं लाए। और हमारी फेडरेशन ने जो सोल्यूशन डेवलप किए हैं, हम उसके बारे में थोड़ी बात। इसका टाइटल है साइंस ऑफ मीडिया का, एक 19 फरवरी 2000 लास्ट ईयर का टाइटल है। वी हैव ए रैमशेकल जुडिशरी, मोस्ट रिग्रेट मूविंग फोर्स। और उनको पूछा गया कि आपके सामने कुछ बदनामी हो और आपको कोर्ट में जाना है तो क्या करेंगे? बोला न्याय तो मिलता नहीं है। सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बोलते हैं कि मैं तो कभी कोर्ट में जाऊंगा नहीं, किसी को सलाह दूंगा नहीं कोर्ट में जाने का। दिस इज अवर जुडिशल। अभी बेहमाई करके मध्य प्रदेश में कोई एक गांव है, उसमें फूलन देवी, आपका नाम सुना होगा फूलन देवी का, 40 लोगों को मार दिया उसने। उसका केस अभी भी चल रहा है, 41 ईयर्स हो गया, मगर अभी तक उसका कोई फैसला आया नहीं। तो मर गए हैं, कॉम्पेंसेशन के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसे एक दूसरा टाइटल है ऐसे पोस्ट ऑफ सेंटर और यूज पॉजिटिव
जजेस के कितने 455 judges are short in the High Court. That counts about 41% of the total sanction strength. ये हालत है, न्याय कहाँ से मिलेगा आपको? और वो citing massive top court warns that the government's administration will also come to a standstill if vacancies in courts are not filled. ये चिंता करती है सुप्रीम कोर्ट, मगर वो चिंता सरकार को बिल्कुल नहीं है, जो भी कुछ होता है। क्यों? What's the reason? 483 सुनिए, this is important at Times of India में लास्ट ईयर ही आया है, 400 hearings in 35 years, no proof, 85-year-old acquitted, 85 years acquitted, उसका बर्खास्त कर दिया, छोड़ दिया, मगर कभी 35 years 400 hearing के बाद ये अपनी जुडिशरी हाई कोर्ट कॉलेजियम येट टू गिव, ये सरकार और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट आमने सामने एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ये ब्लेम आया है अपना रिव्यू करके के अपने मिनिस्टर है बोलते हैं कि हम क्या करें। हाई कोर्ट कॉलेजियम येट टू गिव नेम्स ऑफ 230 जजेस पोस्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं 100 फीट नॉमिनेशन हमने भेजा है, उसमें सरकार कुछ नहीं करते, एक दूसरे को ऐसा ब्लेम ही करते रहते हैं। और 65 years is too early and age too एटेंडेंस कम है, मगर जो भी है वही है, उनके साथ ही चलाना पड़ेगा। 65 years is too early and age to retire, सीजीआई बोलते हैं उसका। at that time our age, average age was 38 years, today it is 70 years। यूपी में भी 65 years में रिटायर होना पड़ता था, उन्होंने 70 years कर दिया। और अमेरिका में तो कोई लिमिट ही नहीं है, जहाँ तक जियो वहाँ तक आर्गुमेंट करता रहो। और इधर शॉर्टेज, भयंकर शॉर्टेज है इतनी, फिर भी इनकी आंख खुलती नहीं है। जैसे प्रेरोगेटिव होती पार्लियामेंट, इफ दे वांट, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये दूसरा चैप्टर है, उसमें दे कैन इंक्रीज द एज लिमिट। 24 years later, Pope acquitted for taking 200 रुपये का दान लिया और चला 24 था। I am almost coming to the end. CRPF man, that is the police, Central Reserve Police Force, उसका आदमी था, gets back his job after 38 years। कोर्ट में वहाँ तक रखते हैं, वहाँ तक कुछ मिला नहीं है, और आफ्टर 30 years he is getting back to job। अभी 38 साल में तो रिटायर हो गया, उसको क्या जॉब का क्या फायदा है। दिस इज द जुडिशल। And wherever I go, wherever I deliver a speech, wherever I participate in webinar, seminar or whatever it is, I go telling the audience that is every time I say maximum human rights, Tiwari ji? Yes, sir. I understand your, every time I say maximum human rights violations are committed anywhere in the country, it is in Indian courts। What do you say? आप सम्मत है? ये एडवोकेटों को भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन लगता है, आपको भी होता है। आपके बगल में बैठी है इंदिरा जी, ये भी बहुत इसमें
अभी उसका इम्पैक्ट क्या है कि जब भी जुडिशरी स्लो है, ओवरऑल वायोलेशन हो रहा है, moral standard goes down, attitude develops for swallowing injustice, killing the spirit of fighting for justice, criminals in society embolden, criminals in politics prosper, government becomes inefficient and unfriendly, corruption in private and public sector flourishes, judges tend to become corrupt, a crop of middlemen operators conduct rampant corruption, investment climate adversely affected, environment pollution increase, lawyers tend to become exploitative, billions of productive man-hours wasted, democratic values suffer, nation losing image at the international level, growth suffers, country ruins, encouragement human rights violation, and rights of women, children, prisoners and social backward not protected. अभी लास्ट में आपको ये नेक्स्ट अभी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, आज कम है इधर अनफॉर्चुनेटली, कोई और भी इधर एक और भी मीटिंग है ना कि इंस्टीट्यूशनल क्लब में, तो इसके लिए शायद लोग उधर चलेंगे in spite of best efforts by the officers of press club. हमारे यहाँ हम लोग आए, मेरा एक अपील है, तो अशोक अरोड़ा तो आए नहीं, शायद अभी आएंगे भी नहीं, मुरारी तिवारी जी से मैं एक दरखास्त करूँगा, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उनके वो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट चेयरमैन वॉटर, ऐसा एक और आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स ऑफ को एक सेमिनार किया जाए, और लास्ट में एवरी मंथ ऐसा कभी कोई प्रेस क्लब हर एक सिटी में, बड़ी सिटी में प्रेस क्लब का इंतजार करेंगे, बार काउंसिल सब जगह पर होता है, बार एसोसिएशन हाई कोर्ट में, उधर उधर हम जाएंगे, खुद जाएंगे, एक डबल कोर्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये हमारी दरखास्त है। आप दोनों जगह पर होंगे तिवारी जी? आप बार एसोसिएशन में भी होंगे? बार काउंसिल में तो है, I think you are the president and you are the chairman. I am the chairman of the bar secretary. ये बार एसोसिएशन में भी No, I am not there. you are not there, but you are a cloud or a float there. We are the supervising body of the all bar association. Okay, thank you very much. I thank all the organizers of this event, honorable speakers on the dais, and my dear friends of the dais. Actually, it is a coincidence. Today only, I requested the law minister to give me any date to hold a national seminar on the speedy trial. Speedy trial. So today only, I have got a copy of that letter also. So hopefully, within a week or two, the moment we give its consent, then I am planning to hold a seminar at the national level on the banner of the Bar Council of Delhi. The more important thing is that we have to understand the progress and improvements in justice delivery system. I must share with you all that in the year 1991, I joined law profession after completing my law graduation from Campus Law Center, Delhi University. And I found lot of changes in the speed of the disposal of matters in the courts. Apparently, I noticed that when I joined the bar in the year 1991, at that time
there was no limitation for filing written statement like reply to a civil suit. There was no time frame. So after few years, there was an amendment in Civil Procedure Code. And now the time has been fixed that within a period of 30 days, the moment you are served with a notice of a summons, you have to file a reply or written statement. Maximum you can delay by another 60 days, but then in that case you have to take leave of that why you didn't file within 30 days. So after this amendment, I noticed radical changes in disposal of suits. Earlier, my senior or whosoever seniors were, they were taking dates like 10, 12, 15 dates for filing the written statement. Unless some cost was not imposed on the party, it was not being filed. But now it has become mandatory that you have to do that. I am putting it as one of the examples of amendments and changes in procedural law in court. Similarly, there are matters relating to Section 138 of Negotiable Instrument Act. Earlier, it was being tried like a civil. There are a lot of changes in that. It has become almost a summary trial. So, I was talking about 138. So, virtually, the courts are fixed now. So, I give the example of CPC, Negotiable Instrument Act. Similarly, in CRPC as well. So, many things have changed. And we have to look at it, positively, that whether things are getting changed or not. The numbers of judicial officers are also increasing. It's a high time in Delhi High Court that we got 47 High Court judges in Delhi High Court. It's the highest number. Arora, I think you will also agree to it. So the thing is that the number of the judicial officers are also very less. And when a matter is pending before a court, it's not every time that it is being delayed only because of the lawyer. On every day, lawyer is being paid to get delay the matter. There are two parties in one matter. One party is happy in case it is being decided early. One party is enjoying in case it is being delayed. So in case I am a lawyer for the party which wants delay, the moment I get another date, they pay me some more amount that Mr. Tiwari, you did a good job. Got it delayed by another 4 months. So we win daily. But what is the matter of worry is that who will regulate this? So the judicial officers who are conducting the court, at the same time they have to be little more vigilant. In case they are vigilant, in that case the lawyers normally do not get that reward. And these things I am finding nowadays that courts are slowly getting strict. We are getting very less chance to get the matter resolved, right? There are amendments in CPC with regard to adjournment also. That the maximum adjournment you can take for 3 times, not more than that. In case you are taking it, then it will be subject to heavy cost or other consequences. So simultaneously, legislatures, they are also cautious about it, but being a citizen, we have to be very careful. I could not listen the entire argument here, as I also got late, like my elder brother. I could not understand the motive of this
seminar, motive of this. We always look for intent, and as a lawyer, I believe that whatever the intent of the organizer is, that we also start singing in the same tune. So I could not understand the tune. That is why I am not able to appreciate the thing properly. But still, whatever I feel, I am just sharing with you that there are drastic changes, improvements in judicial process, and slowly, we are getting changed. The number of judicial officers are also being increased in many places. We have such a large country and it requires a lot of establishment. You see, in this corona, we were suffering a lot, but virtual mode of hearing was given as an option, and we worked on it, and it was quite fruitful also. A lot of matters were disposed of in corona time. So now, virtual hearing has also given an option for the litigants, for the lawyers who were not able to appear in person. So now they can appear through virtual mode also. So things are getting changed. So being a positive person, I would always say that things are getting changed, and I am very happy. I am very thankful to you all that you invited me today. I am feeling fortunate here. Thank you so much. In case anything is to be asked from me, I can answer to that. Thank you, sir. चीफ गेस्ट श्री तिवारी जी और भगवान जी रैयानी साहब मेरे राइट हैंड पर, जो इस कॉज में जो फास्ट जस्टिस का जो डिलेड जस्टिस का जो समस्या है उसको लेकर के लंबी फाइट कर रहे हैं। डॉक्टर राज कचरू हैं, वो मेरे लेफ्ट हैंड में जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, कि कैसे हो रहा है ग्रास रूट लेवल पर कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई ठेका दे दिया, किसी प्रेशर में, किसी माफिया एंड पॉलिटिकल नेक्सस के प्रेशर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया, एक गलत डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिल गया जो डिजर्व नहीं करता था, जो मेरिट पर नहीं है, और जो उसमें मेरिट पे था वो कोर्ट चला गया, डीएम उसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बन गया 10-20 साल बाद, और वो कोर्ट, वो जो डिप्राइव्ड ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट चला गया और इतना उस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिसने गलत काम किया, इलीगल काम किया, माफिया और नेता का जो सिस्टम है उसके प्रेशर में आकर के, और खुद भी उन्होंने जो भी हिस्सेदारी करनी थी वो की होगी, और उसका प्रमोशन होते होते वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट का चीफ सेक्रेटरी बन गया। लेकिन वो जो कोर्ट में गलत आदेश से जो कोर्ट में केस चल रहा है और उससे सरकारी खर्च कितना खर्च हो गया 15 साल, 20 साल, 25 साल में, उसका कोई हिसाब नहीं है और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो देयर इज वन ये जो सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, उस रूल ऑफ लॉ में कोई किसी तरह का जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये इसको कहते हैं कि फ्री फॉर ऑल है। दूसरा, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दीवानी मामले हैं, जो सिविल मामले हैं, उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बता रहा था मैं। दूसरा है कि क्रिमिनल केसेस के बारे में जो मेरी छोटी सी समझ है कि क्रिमिनल केसेस में सबसे बड़ा जो लखोना है, सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि कैसे क्रिमिनल केसेस में जो आयु बीमारी की जड़ तिवारी की कहा हो रही है कि जो पुलिस वाला है आयु,
वो आईओ जब पुलिस में भर्ती हुआ तो उसने उसके बाद में खेती का प्लॉट बेच करके 10 लाख घूस देके अपने लड़के को कांस्टेबल बना। वो प्रमोशन होते होते एसआई बना, एएसआई बन गया, उसको इस केस का जांच का काम दे दिया। थाने से उसका थाने में वो काम कर रहा था, आईओ का काम कर रहा था। ऑल ऑफ सडन मंत्री जी के साथ पीएसओ की उसकी ड्यूटी लगी, तो उसके बाद डबल चार्ज हो गया। मंत्री जी का पीएसओ भी है और आईओ भी है, और आईओ से उसको इसलिए भी हटाया कि अदर कोर्ट में, क्योंकि वो केसेस में तो उसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है। हमने बहुत सारे मंत्रियों का देखा कि वो आईओ मंत्री के साथ, मंत्री का पीएसओ है और 15-20 दिन तक वो गायब है। तो अगले दिन देखा कि वो गायब है, तो पूछा कहाँ करना था, उनके कोर्ट केसेस में तारीख चल रही, वो गए हुए गोरखपुर। तो ये जो चीजें हैं, तो एक आदमी, तो ये जो पुलिस वाले की जो ड्यूटियां हैं, ये जो पॉलिटिकल नेताओं के जो पीएसओ बनते हैं और ये जो आईओ बनते हैं, इनका सर्विस कैडर जब तक आप अलग अलग नहीं करेंगे तो पता लग जाएगा दूसरी पार्टी को कि ये आईओ कौन है। तो कहते हैं आईओ तो मंत्री जी का पीएसओ है, मंत्री जी के साथ तो सुबह शाम उनकी छत्र छाया में रह रहा है। तो मंत्री जी से सीधा अप्रोच किया जाता है या नेताजी से सीधा अप्रोच किया जाता है, जो भी नेताजी है, और कहते जाता है कि भाई तुम आईओ सुना है कि इस केस के आईओ किंगफिशर है, तो ऐसा है कि इनको मदद करनी है अपने आदमी। तो आप जब तक जुडिशियल सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन का जो लेवल है उसको साइंटिफिक नहीं बनाएंगे, उसको स्पेशलाइज नहीं बनाएंगे, और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जब घालमेल होगा वही आईओ हुई, और ये जो करप्शन की जो चेन है ये पूरे सिस्टम में बंधी पड़ी है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 साल तक, 3 पीढ़ियों तक ये केसेस चल रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग के केसेस चल रहे हैं, लूट के केसेस चल रहे हैं, और 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं, कोई जस्टिस का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। और ये हालत है आज की। कोर्ट में तिवारी जी जैसे कह रहे थे कि तारीख पे तारीख कर रही है, और हम लोग इस चीज का मजाक, आज जुडिशरी का जो सबसे बड़ा मजाक हो रहा है कि तारीख पे तारीख कर रही है। जैसा कि अभी गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, तो किसी ने बोला कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आपने, अगर आप साफ सुथरे हैं, आपके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, मिसकंडक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो भी आपकी बदनामी हुई, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, आपको साफ करने के लिए। उन्होंने कहा नो दैट मिस्टेक आई विल नॉट डू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं मैं कोर्ट जाने की गलती नहीं करूंगा। उनको पता है कि कोर्ट जो है 300 साल तक भी उसका केस का जजमेंट नहीं होना है। तो ये जो चीजें हो रही है कि रूल ऑफ लॉ का जो वायलेशन हो रहा है, और पुलिस जो है, दूसरा जो मेरा अपना विचार है कि एबिलिटी जो जजेस है, जजेस की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ जजेस, वो बहुत डिटोरेट कर गई है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी वकालत नहीं चल रही थी। अरोड़ा साहब मुझे माफ करेंगे, हालांकि अरोड़ा साहब तो बहुत बेस्ट वकील है, लेकिन जिनकी वकालत नहीं चल रही थी उनका थोड़ा बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जज तो बन गए, जज के पोस्ट पर सुशोभित हो गए, लेकिन क्या हो रहा है कि वो उनकी समझ में केस आता ही नहीं, उनको जो प्रोसेस जुडिशियल प्रोसेस है उसकी नॉलेज पढ़ाई नहीं है उन्होंने। एंड एज ए एडवोकेट जो उसकी प्रैक्टिस थी वो ऐसा थी नहीं कि वो इस तरह के जो केसेस को, उनके अंडरस्टैंडिंग, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है लॉ की, जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी है ही नहीं। तो वो क्या करता है कि समझ नहीं है, समझ आता ही नहीं, मतलब उनको डेट दे दे, और ये सब चलता रहता है। और अल्टीमेटली वो जज साहब कोई अल्टीमेटली तो कोई है नहीं कि कोई जज के खिलाफ, जज अगर कोई डेट दे रहा हो लंबी लंबी, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन का, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फुल प्रूफ प्रोसेस हो कि जो जज डेट दे उसको
उनको निकाल दो नौकरी से। तो ये जो चीजें हो रही ये बहुत खतरनाक स्टेज पर ये जजों की जो योग्यता है, जजों की जो काबिलियत है, पेंडिंग जजों के कितने केसेस, कितने जजों की जरूरत है। और जैसे अभी रैयानी साहब ने बताया कि जो जुडिशरी पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो एक्सपेंसेस तो बहुत, जिसको कहते कोई बजट ही नहीं है। मेरे को कोई बता रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मिनिस्ट्री के सामने गिड़गिड़ाता रहता है छोटे छोटे बजट के लिए। और जो पॉलिटिकल सिस्टम तो चाहता है कि कोई बाकी चीज तो आपने कब्जे में कर लिया, ये जुडिशरी की जो ऑटोनॉमी है वो तो ऑटोनॉमी बाकी जगह तो आपने कब्जे में कर लिया। जुडिशरी थोड़ा सा हड़का भी दे लिए सरकारी जो प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और लेकिन अब सरकार की भी कोशिश है कि हर चीज को कब्जे में लो, इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में लो, पार्लियामेंट को कब्जे में लो, मीडिया को कब्जे में लो, मीडिया के जो मालिक हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको कब्जे में लो। तो ये कि जुडिशरी यहाँ भी इस तरह के कब्जे कर लो ताकि ये लोग इस काबिल ना हो कि ये कोई इस तरह के एडवर्स जजमेंट, सरकार को शर्मिंदगी दिखाने वाले जजमेंट पास करें। और उसका नतीजा है कि जो गरीब आदमी है, जो नीडी व्यक्ति है, जो कोर्ट में गया है, जो न्याय पाने के लिए गया है, जिसका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, वो अगर कोई शिकायत कर रहा है तो बजाय कि जो विक्टिम है, बजाय कि उसको मदद करने के उसके खिलाफ केस दर्ज हो रहे। जैसे हमारे एक जर्नलिस्ट है अर्थ न्यूज के जुबेद मोहम्मद जुबेद, अर्थ न्यूज के एडिटर, ये बताइए कि उसका कसूर क्या है कि वो फैक्ट चेक करा रहा है। वो तो देश की सेवा कर रहा है, और जो जर्नलिस्ट देश की सेवा कर रहा है वो उसको कह रहे कि उसके खिलाफ जो खुंखार जो अपराधी की तरह उस पर आप केस कर रहे हैं। उस केस के जरिए आप क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल दिस सीम्स टू बी अ क्लोज नेक्सस बिटवीन द सब सिस्टम, कि वो जो जजमेंट जज साहब महोदय हैं, जज साहब हैं, कि वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो किसको खुश करना चाहते हैं ये भगवान खुदा को पता होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी के कई एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और सवाल जवाब भी होंगे। और मुझे प्रेस क्लब इंडिया की तरफ से आप सब मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो डिस्कशंस है, इस तरह के डिस्कशंस को अगर आप जुडिशल एंड मीडिया, तो जुडिशल मीडिया को लिंक करके कोई इस तरह के डिस्कशंस डिबेट को करेंगे। होता क्या है कि ये पार्टिकुलर दिस इज कॉकटेल ऑफ कि जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी का जो कॉकटेल है, इसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो डिस्कशंस फ्यूचर में हो, मीडिया को जरूर उसमें एक पूछ जरूर रखा। उससे क्या होगा कि मीडिया के जो हमारे साथी है उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उनकी भी एक समझ बढ़ेगी, और वो भी मीडिया का क्योंकि जो रोल बहुत ज्यादा है, आपने क्लिपिंग दिखाई तो मीडिया की क्लिपिंग दिखाई, तो मीडिया की जो भूमिका है जनरल अवेयरनेस करना, एक पॉजिटिव और जो भी चीजें क्रिटिसिज्म करना, इन सारे सवालों पर मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत करूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप चर्चा आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected members of the Forum for Fast Justice and the Press Club of India. First of all, thank you for organizing this seminar today. It's also momentous because we're looking at our justice dispensation system after 75 years of India's independence. It's important to keep the discourse going. Sorry, am I audible? Yes. And to constantly cultivate hope and the possibility of transformation, and to look at concrete suggestions and ways forward to do so. I practice as a lawyer, not only in the Supreme Court, but also in the District Court, High Court, as well as tribunals. I have come from an earlier career of about 17 years in research, so I hope I also have an outsider's view when I look at the judiciary. I also have an insider's view because I'm very much a part of the system now, having been in practice for over 16 years now. So in the past, we've looked at a macro view
of the problem to suggest remedies, more of a data-based approach. It has been reported that there are over 4 crore pending cases in this country. There is little allocation of budget for the judiciary, and that there is a great shortage of judges. Most cases, the majority stagnate and don't move quickly, whereas they actually can and ought to move and get over and done with. Much has been written about that. Much has also been written about some serious issues faced today, the lack of independence of the courts, as an institution manifested by the open invitation by the Supreme Court to arrest activists and people who have pointed out concerns with the government and the system. But I feel that there are aspects to the problem that support such conduct and lack of accountability in the judiciary, and it runs quite deep. They are myriad and manifold, and they're so rampant that we almost don't notice them. We virtually take them for granted, and they manifest in the stagnation and tired delays in our courts, the lack of care to render justice, the loss of peace of mind among those who commence their quest for justice. It's important that we become aware of them and do something about them. To illustrate this, I'd like to share some observations, experiences and stories of what people face in courts, so that it'll leave us with some questions, I hope, some thoughts and some possible solutions. What do we mean when we allude to justice? We mean a system where there is dignity of the individual, a scheme of law where every person is treated in accordance with their rights and with fairness, where everyone receives their dues from the system, and all this is done with reference to a framework which is the rule of law. Then what comes in the way of justice in our country? When we venture forth to seek justice, we do not feel treated well or treated with dignity or compassion. Instead, we are left very often with a sense of dissatisfaction, disquiet and despair. We almost never receive justice, and we almost never receive justice on time. And we've gotten so used to this, sadly, that justice being denied to us in so many little ways has become a habit that has been long worn and that needs to be cast aside to let in fresh energy and a new outlook. So how can we receive justice? We need to look at both issues of systems and a culture or an attitude or mindset. We need to be aware of these aspects, we need to acknowledge them, pay attention to them, and look at a new outlook and perspective that is more of a public service orientation, which is utterly lacking in our system. That will enable us to transform our present situation and to work with casting aside the old and embracing and wearing these new habits of confidence, hope, dignity and justice. The right to justice is guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, which is a fundamental right. By a fundamental right, we mean it's a right that is basic, inalienable, which means that we are told we cannot give it up even if we want to. It is also a goal under the SDG or the Sustainable Development Goals, Justice for All by 2030. In this backdrop, I would like to share the story of a case that we are dealing with presently in one of the district courts. A young girl of the age of 22 from Uttar Pradesh was married to someone in NCR, the National Capital Region. She was ill-treated by her husband and in-laws, tortured for dowry, a car and money. She complained to her parents of her husband's abuse, including a discovery of a prior marriage of his, as well as a forcible abortion. She returned home to her parents, but her husband and in-laws came over and insisted that they would look after her and bring her back when she was on the mend. So she went back to her husband's. Her brother and father were in touch with her every day via mobile. She spoke of her fears and their threats to do away with her. Her family decided to bring her back, but when her brother called her to confirm that they were collecting her the very next day, there was no response to that call.
Her husband, after several hours that day, bothered to take his call and said she had dressed in some fancy clothes and left home. She has never been seen since. It has been 9 years since this incident. Now about the case. We were engaged 5 years after this incident, and then the following has happened. It had already happened before we arrived. The police, to begin with, refused to register an FIR until the girl's father brought 200 people from his village in UP and sat in dharna outside the police commissioner's office. It took them 1 fortnight to get that FIR registered. 1 fortnight. The police randomly dropped the charges of abduction and forcible abortion against the accused. A body of a young girl of similar description was discovered in the vicinity on the same night, strangulated and burnt, half burnt. The police botched up the FSL, the forensic test, by deliberately not collecting the hair follicle for a conclusive DNA test. It destroyed crucial evidence in the case. The father identified the body of the girl as that of his daughter. He identified her clothes and her facial features as well. The case went for trial and the judge was informed of this parallel case of murder. He refused to connect the two and left it to the police despite allegations of collusion of the police with the accused. The family moved repeated applications about police collusion and the lack of a proper investigation, but the court remained a mute spectator and failed to pass any fruitful directions. The court said it must not influence the police investigation. This, in my view, amounts to injustice by active omission. The accused filed a missing report saying the girl ran away with someone else. The prosecution has not assisted the victim or state and we are now trying to see what can be done in the case. The trial commenced 5 years later. It was very hard for the father to depose. The court did not allow other family members to become witness despite applications. The court today repeatedly adjourns the matter but records in the order that the parties sought adjournment. There are unending adjournments and unending chances to the accused in the interest of justice. So the family has suffered not only the trauma of losing their child, but also the seemingly insurmountable battle for justice. This is just one of the numerous cases that languish in our system. It is relevant that parties are supplicants before the court. We stand at the judge's seat, though both judges and lawyers are officers of the court. The judge does not behave like a public servant, but as a master of the court. The very hearing of the case is like a great favor to the parties. There's another case in the High Court. The petitioner, who is in his 80s, has filed a writ petition challenging the fraud committed by a body. The case was stuck for 5 years and eventually heard. 5 months later, the judge recused without giving any reasons. The matter got transferred to another bench and the hearing started all over again, 5 precious years later. This new bench then directed that we must file an amended petition. We filed that, it took us about 8 months. The next bench advised that we file a fresh petition, another 1 year. Now the public authority is trying to buy time to relook at its order. 16 years of delay in the court. The attempt by the public body, which is being attempted to be held accountable, is to avoid the hearing altogether because there are public records that clearly show that there is fraud committed by all parties involved. Earlier, this matter never used to reach because of overlisting of cases. So it is as if planning to have a manageable number of cases on a particular day is beyond all control. Let me come to another case on street vendors. We represent street vendors. For street vendors like sabziwalas or sellers of different wares, there is a well-oiled extortion racket with the police, municipalities and development authorities running into frauds. It's called hafta or mahina. Vendors are deliberately left in unregulated conditions. No civic amenities are provided by the municipalities. The reason is obvious, it's for control, uncertainty,
so that they are defined as illegal and so that the bribery continues. It goes all the way up the web of bribery. Vendors are seen as and labeled as nuisances, dirty, and they lack public sympathy because of this lack of regulation. Street vendors are now protected by law since 2014. Government reports accept that street vendors contribute a considerable portion of national income through their sweat equity. As they are self-employed, they also reduce the burden of employment on the state. When the law enables street vendors to stop paying bribes, the municipality and police filed false cases against a group of vendors. The High Court issued contempt against the police and municipal officials, but the case shifted to a judge who had formerly represented the municipality and in one hearing dismissed the case. Now, just to look at some problems, I'd just like to wrap up because I believe there's a paucity of time. I would ideally like to speak some more. We are often left without justice. Some possible solutions: management systems, video recording of court and police proceedings. I request that there may be transcripts provided in each of these cases and they may be made part of the record, because in cases after lengthy hearings, there is no record of what happened in the court. For the first time then, we will have a record of court proceedings. Most important, it will hold up a mirror to us to make us aware of court conduct as well as areas of transformation. It will make the system more transparent and accountable. Judge and lawyer training and sensitization, mindful communication, verbal as well as non-verbal. Very often, people are not heard. There is crosstalk that takes place, so it's impossible to be heard and understood. Compassion, deep uninterrupted listening and communication, and training in justice orientation. Formats to encourage communication and dignity. Lawyers be seated on the other side of the table rather than stand in a supplicant manner. Judges to address litigants as sir and madam like they do nationally, as well as to treat them with respect. Prohibition of titles such as lordship and ladyship, as it gives grandeur stature and is against constitutional values and the Bar Council rules that prohibit a culture of servility. Templates for orders and judgments. They ramble for 500 pages with very little meaning. Short, crisp orders, facts, analysis with reasons and application of the law. There be an order and also what is a ratio, a generalized principle laid down. Today it's very difficult to figure out what is being said in a judgment. Court management, leaving the management to those skilled and trained in management of court systems. And on appointment of judges, leaving appointment to an independent body, neither judgments nor government. Having a transparent and proper system by having advertisements to invite applications with proper representation, diversity, etc. with increased strength and advanced filling of vacancies, and with adequate experience in the law. There are meant to be 25,000 judges today. About 20% vacancies are quite common, sometimes 40%. So we also suggest increase in strength in courts, an increase in budgets, and also an audit of the judiciary. Accountability of judges, an independent body for evaluation of judges' conduct and output. Consequence, not only in extreme cases of corruption, but also for bias, adjournments, unjust orders, unfair discriminatory ones, adjournments, and ensure field visits so that there is experience and an understanding of ground realities. Many judges are not even aware of what happens in juries or among the poor, and is sitting with the law without full understanding, and so that actually hampers them, and it's unfair to expect judgments from them as well. So I'm not trying to put anybody in the wrong here. I'm just saying the system is not supportive of either. Overlisting of cases every day. So it's very difficult for a judge to sit with 100 cases listed or 50 cases and deal with them. So a realistic cases with a sense of time so that 90% are not adjourned. In any case, in any specific case, 90% of hearings, if there are 100 hearings or 100 dates, 90% of them are adjourned and only 10% of them are actual hearing. So we suggest that on the contrary, 90% of the dates are effective. So there's less listing, less burden on the court and the judges as well. So let the day be organized, let the case be organized so that detailed hearings are there.
all in all, hope, support, talking about these things and transformation. Thank you very much. मेरी जो बात है सिर्फ मैं ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा whatever I experience. In fact, the advantage of speaking at last is that most of the things are covered. And speaking after Indira is very difficult to add anything. She has, I think, covered every point I had in mind, rather more than what I had in mind. But still, whatever, and since I have been called upon, the disadvantage is that people have lost interest now because everything is said. But still, a few things which in my experience, I'll share with you. First of all, I think Bhagvanji is very much concerned about the under trials. So for under trials, I wish to share a couple of incidents that how mindset, what Indira was talking. In 1905, Vinay would remember, Vinay was part of that team. We filed a petition in the High Court, and my Lord Justice Vijender Jain was the single judge dealing with criminal matters. In one matter, we got 368 persons released in just a couple of days. And Hindustan Times gave an editorial there. They published an editorial that what the whole administration could not do, one public spirited lawyer and public spirited judge could do that. That is 1995. 2000, same petition, similarly petition is filed by us before my Lord Justice Bhandari. He was also very compassionate. That is why Indira has covered every point. He was also compassionate as my Lord Justice Vijender Jain was, and he also released with us few hundred prisoners in just a couple of days. I remember we used that couplet or the poetry of Lyndon Johnson, the then president of US. He had written in a very nice poem where he says, I am not in jail because I am guilty of heinous crime. I am not in jail because I am likely to run away. I am not in jail because I have not been granted bail. I am in jail because I am poor. So there are so many persons still dead. Even now Prime Minister has talked of this, Chief Justice has talked of this, that there are lakhs of prisoners languishing in jail. Now same petition is filed then in 2005. 95, then 2000, as an individual or individual organization, how many people you can help? But if the state helps, that makes a lot of difference. When 2005 it is filed, Bhagwanji, the judges there, 2 judges, now it is before the senior judges. If 95 it was allowed, 2000 it was allowed, 76 it was allowed, that means 2005 the judges manning the courts were men much junior to all those judges. So these judges whose seniors had passed such good orders, now they are saying, where is your wakalatnama? They say, no, we don't entertain these petitions. Let them file. How can you file on behalf of 200, 300 prisoners? And the petition was ultimately disposed of. I have no inhibition saying that poetic justice happened because both of them were tipped to be Supreme Court judges and both of them were not appointed Supreme Court judges. That is poetic justice. Of course, we can have sadistic pleasure or we can say that yes, whatever happened was good. But thing is, the sad commentary is what Indira was talking. So what is the same system is there. No need for any reform there. The mindset is most important aspect of the case. That's why I'm obsessed with this. That unless the mindset is changed, they are trained. You also talked of training judges, training lawyers. So that is most important, irrespective whether this fund is allowed, not allowed. Of course, that should be allowed. No quarrel on saying what Bhagvanji is saying is right. There should be more judges, more funds should be there. But with same setup also, if they don't deliver justice, they should be accountable again in respect. So you can't get away with this when your seniors are saying you release people and you come and you like what do I say, like a king you say that no, nothing will not entertain. So there should be accountability. You can't run away like this. Another incident which comes to my mind, the training of mind that Justice Bari, who is 91 sir now, he is 91. Then he was a judge here, say 28 years back. He used to finish his matters by 11 a.m. All kachi peshes, as we say, miscellaneous matters, he used to finish by 11 and 11 o'clock he'll say, okay, call the old matters.
and would decide old matters. The judge sitting next to him with same jurisdiction used to finish matters by 4:35 p.m. Same jurisdiction, same type of cases, so same fund, same salary, same steno. What is happening? One judge is finishing by 11 o'clock and calling the old matters, and 11 to 5 he attends the old matter. The judge sitting next to him is not even finishing the kachi peshes by 5 p.m. So what is the mindset? Training of mind. Third incident I said. Very recently you might have heard or read 3 judges of Supreme Court. Now this is shocking, and this also reflects upon the significance of training of mind. 3 judges of Supreme Court acquitted 4 accused of murder and asked for explanation of investigating officer and a case be registered against him. The same judge, the same case. Now the Shakespeare says, what is the stage? We are all actors. So let's erect a stage. Stage is the evidence is same, the qualification of judges is same, accused are same, prosecution is same, CRPC is same, IPC same, constitution same, evidence act same, everything is same. 10 years back, 3 judges of Supreme Court give them death sentence. And after 10 years, 3 judges of Supreme Court say no, acquitted. It is all evolution of your own mind, training of mind, as I say. The qualification of judges is same, evidence is same. So all these incidents show that training of mind, and not only this, before we became independent, our Dr. Ambedkar, who has been the father of Constitution, has been saying even before independence, that whether it is judiciary or it is the Constitution, what is most important, he says Constitution would be as good as the people who would govern it. So same is true about the law, about the implementation of law. So unless we change this mindset, train the evolution of people, not of law. Law would evolve if people are good. If people are not good, law would be bad. That is what he says. It would be as good as the people who would govern it. One judge, Sir Kachroo sahab, you would be shocked to know, a journalist from JNU, I should not have named the institute, a journalist from JNU, postgraduate from Delhi University, was in jail for 3 months on the charge. You would be shocked to know. Hold your chair and you would not believe what I am saying. He was in jail for 3 months on the charge that he was found in the banquet hall of a 5-star hotel without invitation. That's all. This is the charge. So that means 3 months would mean, young lawyers are here, at least 6 times he was produced before the magistrate. And the magistrate does not take cognizance of this. इतने छोटे से offense में इसको अंदर क्यों रखा हुआ? But the moment we used to go to jail, I mean visit jail, sorry, not go to jail. We used to visit jail quite often. When we discovered this case, next day I mentioned before Justice Dalveer Bhandari was there. I said, see, this is what is happening. He says, all this standing counsel immediately said, not for a second this man should be in jail. Today you release him on personal bond. So law is same, allegation is same. 6 times he is produced before the judge, nobody bothers. Once, as Indira rightly said, he is produced before a compassionate judge, he says, what is happening? How can you do that? So it is ultimately, Bhagvanji, till the time they bring more judges, till the time they put in more fund, it is very important to sensitize them. And again I am taking a word from her. Otherwise it would not happen. The other day I was before my Lord the Chief Justice of India, then Chief Justice Dr. Thakur Sahab, of Kashmir se. He said, what is the matter? I said, matter is कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शायद. This is the matter. Matter is हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर न हो कहीं ऐसा तो ऐतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो. This is the matter. This is the constitution talking. This is the preamble. When you say हर एक घर में दिया भी जले, that is the constitution. They say secure justice for all. But where are we? Every day we listen 80 crore are being funded by the government. So how do they get even the basic needs are not there. There is no independence.
I mean, I have no inhibition saying this. Let the parliament summon me and tell them, you are celebrating this 75 years. But for last 75 years, the parliaments, one after another, have befooled this nation. I am saying this because they have not worked in the right spirit. They have not made sure that people are trained, people are given jobs. The freebie they are talking today, it's a serious issue nationally. Why they are talking today? I mean, they are giving gold chain, they are giving TV. This is independence or you are buying people. Saryam Rishwat de rahe hain. So judicial reforms, it is very important that people are trained, people are made compassionate, fund would come. And then another thing, Lakhera sir was also talking investigation. Today was his investigation. I have been doing trial and other matters for last 46 years. I have seen IO sir कहता है गाड़ी निकालो जब मैं बाहर एविडेंस देने जाना फटाफट गाड़ी निकालो. वो गाड़ी निकालो एविडेंस के लिए भी वही जा रहा है. फिर वो कहता है गाड़ी निकालो आज पीएम का रूट लगा. गाड़ी निकालो. गाड़ी निकालो मेरे को वहाँ पर जाना है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. इन्वेस्टिगेशन भी वही कर रहा है. प्रोसिक्यूट भी वो कर रहा है, आईओ के पास हो जा रहा है. पीएम का रूट लग गया वो भी वही बात कर रहा है. वी हैव बीन सेइंग सिंस एजेस दैट इट शुड बी टोटली बाइफरकेटेड. आईओ जो पीएम के रूट पे जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन उसको मत दो ना, फिर उसको पीएम के रूट पे रखो. इन्वेस्टिगेशन भी वही कर रहा है, कोर्ट में भी वही जाना है, प्रोसिक्यूटर को भी. टुडे इज एंड इज राइट. आई एम नॉट द वन हु वुड मिस वर्ड्स. आज वो हालत है हमारे वो एलजी साहब होते थे सर कौन बोले Najib Jung and he was the LG here. His mother, a very very sweet and compassionate and nice lady. उनको कुछ दोस्त जब बैठ के किसी की बुराई करते थे तो कहते थे बेटा ऐसे किसी के बारे में क्यों बुरा करते हो, ऐसे किसी को क्यों बददुआ देते हो, ऐसे मत किया करो. She would always say talk good about people. लेकिन उसको बोल दिया जब कुछ आपसे गुस्सा आया और उसको कोई वाकई कोई बददुआ देनी है तो फिर उसको ये बोल दो जा अल्लाह तेरे को अदालत का दरवाजा दिखाए. This 90-year-old woman is talking mother of Lieutenant Colonel. Why? मैं वकीलों पे बात करता हूँ. क्यों शेर बनाए कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हिंदी शायरी क्यों गया? क्यों गया? Lawyers are good. Mostly they are doing good job, but then there are lawyers, as our chairman was saying, कि just adjournment के लिए उनको कहते हैं adjourn कराना. 6 साल मिले तो मैं ऐसे ही कराता हूँ. There are some experts in delay. There are some experts who do it quickly. So we have to find out who are the black sheep, who are delaying, who are doing it right. And as Indira rightly said, when you appoint judges, you advertise. What is so opaque about this? You advertise. Whosoever wants to apply should apply. And then there should be a screening committee. And then there should be independent body. Why this in opaque system? You know recently what happened in collegium, one judge changes, the whole list changes. Out of 5 judges, one judge would change, the whole list would change. So nobody is asking why is it happening. कि कल तक तो ये 5 जज थे काबिल, वो एक जज के निकलते ये 5 हट गए या नए 5 काबिल हो गए, उनसे कोई पूछता नहीं है. लेकिन हम तो पूछते हैं इंदिरा, हम तो वो उसके है ना कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग और रो के बात कहने की आदत नहीं. हम तो खुल के बात करते हैं लेकिन जितनी वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. कितना आई एम वेरी श्योर. आई कांग्रेचुलेट भगवानजी एंड डॉक्टर राज that they are doing great job. This should be actually documented. Cases like Indira said, we said it should be documented. Why that judge is not accountable when his seniors release thousands of prisoners? He says no, I will not do. What is this? So I am very happy to give it. 2015 में एक यहाँ नेशनल लीगल एड हेल्पलाइन अनाउंस हुआ. 15100 का नंबर पूरे हिंदुस्तान के. तो 2020 तक ये कभी चला नहीं हिंदुस्तान में कहीं को भी. और 2020 में हमारा फेडरेशन ने नालसा को कहा कि देखिए ये आपका ये जो 15100 हेल्पलाइन है ये चलता नहीं है. इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको चलाने. तो हमें बहुत समय लगा उनको कन्विंस करने के लिए कि हम ये आपको चला के दिखा देते हैं और हम अपने कीमत पे इसको चला देंगे और जितने भी इसमें खर्चा लगेगा वो हम ही करेंगे. तो एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में. तो हमने ये चला दिया. मार्च 2020 से शुरू किया.
जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं चल रहा आज की तारीख में। तो हमारा ये प्रिजनर्स के लिए उसके बहुत सारे इस हेल्पलाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस मैं बताऊंगा आपको, और जो सिस्टम बना है इसके साथ। लेकिन ये प्रिजनर्स का मैं बीच में लाना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रपोजल था जो हमने दिया भी था मिनिस्टर होम अफेयर्स एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन को, कि आप हर एक प्रिजन में एक टेलीफोन रखिए, एक स्पेशल टेलीफोन रखिए, तो सिर्फ 15-100 का फोन उस पर लगेगा और कोई फोन नहीं लग सकता। मतलब ये आपने जहाँ कॉफी बन रहा है, टी बन रहा है, लंच है, खेलने की जगह, उस जब वो फोन उठाएगा प्रिजनर तो सिर्फ 15-100 पे बात कर सकता है और कहीं भी बात कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सेस टू जस्टिस तो आप दे रहे हैं, राइट तो है, लेकिन आप उसको जरिया नहीं दे रहे हैं अपनी बात रखने का। तो अगर आप ये 15-100 पे फोन लगाएंगे तो ये कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होंगी, उस पर DLSA पे एक सिस्टम बनेगा, उसके लिए DLSA में कोर्ट पिटीशन जाएगा, उसका वारंट मिलेगा, ये कंटिन्यूसली और डेटाबेस भी बनता रहेगा। सो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं, कोई इतना खर्चा नहीं है, बस विलिंगनेस की जरूरत है, और वो विलिंगनेस अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे दिख नहीं रही है। दिस कैन बी प्रेस्ड। और मैं ये आपको दूसरा इसके साथ बता रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन कितना पावरफुल हो सकता है। निर्भया के बाद हमने यहाँ एक कैंपेन किया कि जैसे कोई अमीर औरत लड़की है, उसका वायलेंस होता है, उसकी फैमिली इन्फ्लुएंसर है, पैसा भी है, तो उसके लिए दो बैकअप है। एक तो उसकी फैमिली है जो उसको केयर, कंफर्ट, शेल्टर सब देती है, और दूसरा उसके पास एक फर्म ऑफ लॉयर्स है जो कि उसको पुलिस के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 161 क्या होता है, 164 क्या होता है ये समझाते हैं। उसके बाद उस प्रोसिक्यूटर के साथ, वकील के साथ काम करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो पिटीशन, इंटरनल एप्लीकेशन मदद करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है तो DIR बनाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर से बात करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो हमने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अमीर भी पूरी गरीब से गरीब औरत के लिए ऐसा ही सिस्टम बना दिया जाए। और ये सिस्टम हमने चालू कर दिया 2014 में, लिमिटेड जगहों पे, छत्तीसगढ़ में, वो जम्मू में, और उसके बाद डेवलप हुआ। इसके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है वो हम लोगों ने बनाया है। मैं अभी ये बोल रहा था वकील को, वकील साहब है, यंग लॉयर है, मैंने कहा ये सिस्टम में ऐसा होता है कि एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का अगर फ़ोन करती है आज की तारीख में, दूर दराज है, किसी गांव में है, उसने एक मुफ्त का फ़ोन किया 181 पे, या एम्बुलेंस पे किया, या 112 पे किया, या 15-100 पे किया, या चाइल्ड लाइन में किया, किसी भी हेल्पलाइन में किया, तो हम उसको पलट के वापस फ़ोन करते हैं, 1 घंटा काउंसलिंग करते हैं टेलीफोन पे, DIR बनाते हैं, इंटरनल एप्लीकेशन बनाते हैं, पिटीशन बनाते हैं, वकील अपॉइंट करते हैं, ब्रीफ करते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ता। और ये पॉसिबल है, लेकिन हम लोगों को डिफिकल्टीज, हमने करीब 25,000 औरतों के साथ काम किया, 25,000 केस, 5,000, लेकिन लिमिटेड 2 पॉकेट्स में है। एक पॉकेट और था आसाम में, वहाँ से हमें भगा दिया गया, अब 2 ही रह गए। तो इस किस्म का मुझे लगता है, ये मैं शुरू से, जब से मैं इस कोर्ट में आया, शुरू से मैंने कहा कि जब तक कि सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसमें, तो ये ब्यूरोक्रेट्स, IAS अफसरों के बस का वो नहीं कर सके, ना उनको तो इंटरेस्ट है, ना उनमें उतनी अटेंशन स्पैन है, ना उनको कोई चाहत है कि ये सिस्टम सुधर जाए। सभी लोग जब ये जस्टिस के बाद वी हैव डन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसर्च इस पे कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, लिटिगेशन, गवर्नमेंट की लिटिगेशन कितनी है, लॉ ऑफिसर्स में, आपके ये सब वकील हैं यहाँ,
अब देखिए 40% लिटिगेशन रिट सिविल रिट पिटीशन है सभी हाई कोर्ट्स में। और जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के वो ऐसे डिपेंड करते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैंने एक लॉ ऑफिसर को जम्मू में पूछा, भाई तुम्हारा काम तो ये है, यू मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। What you guys are doing is vehemently protecting the interest of a public servant जो जिसने काम करके ट्रांसफर होके चला भी गया और आप लगे हुए हैं उसके साथ। 3 साल के बाद जज साहब बोलते हैं कि ये तो फजूल है, पूरा 3 साल गुजर गया, आपका भी जाए उसका भी जाए, लेकिन पूछता कोई नहीं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोगों ने रिसर्च कर करके पता किए हैं कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ये तभी मुझे लगता है जब हमारे जैसे सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करें। भी गवर्नमेंट के बस का टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं बोल रहा था इंदिरा को, सरकारी सिस्टम में टेक्नोलॉजी नहीं बनता है, चाहे आप कुछ भी कहें, जिनके बस का नहीं तो, लेकिन सिविल सोसाइटी के बस का है। लेकिन ये लोग हमें घुसने भी नहीं देते, इजाज़त ही नहीं देते हैं कि हम अपनी बात रख पाए उनके पास। अभी ये जो सिस्टम हमने बनाया, सॉफ्टवेयर सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बनाया, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, कहा कि हमें नीच लगाना, हमें सरकारी सिस्टम चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट किया, कहा कि 150 करोड़ रुपए का बजट बनाएंगे, तब लगाएंगे, तब तक ये 2-4 साल 5 साल वो निकल जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू सी, इज सम प्रेशर फ्रॉम media, from public to the government, that we need civil society participation. Civil society participation मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है और बाहर से के ही लोग देख सकते हैं। मैं अभी कोर्स को ऐसे देखता हूँ जैसे मिरर, मुझे तो मालूम है जैसा मैं आउटसाइड है, लेकिन मेरे पास रोज ही कोर्ट केसेस होते हैं। So I can see what is happening in every court case, every time लोग मैजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग देखते रहते हैं। जो इंदिरा ने बोला, जो अशोक ने बोला, we can reflect it, we see every day। यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में मैजिस्ट्रेट ऐसा धमकाते हैं, ये DIR लाइए, ये करिए, वो करिए, भी हद आज भी जरूरत नहीं, वकालतनामा कहाँ है, इस लड़की का वकालतनामा, ये कंटिन्यूसली काम करते। सो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ में ज़्यादा टाइम होगा। वी कुड टॉक अबाउट आवर्स। इसके साथ ही ना इसके साथ ही मैं विनय कुमार जी को देखूँगा। I will extend my gratitude to Bhagvanji Raiyani। तो आगे अगर और कुछ होगा, कोई स्टडीज आएंगी, अशोक जी तो हमारे मेंबर नहीं पुराने, और हमारे तो जब से कोर्ट में कवर करता हूँ तो अशोक जी से 30 साल से भी ज़्यादा पुराना। और जो जस्टिस विजेंद्र जैन की बात बता रहे थे, अशोक जी तो दिल्ली हाई कोर्ट आई, उसको कवर एट दैट टाइम। तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम थी, रिलीज ऑर्डर तो हमने ले लिया था मगर कोई पर्सनल बॉन्ड देने वाला नहीं। दैट इज ऑल्सो। और दूसरा लखेड़ा जी ने जैसे बताया, मोहम्मद जुबैर का सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरव्यू कि सारे उसके FIRs के ऊपर, और इमीडिएट सेम डे रिलीज was ordered by Supreme Court. There is another journalist, Siddiq Kopan, who is languishing in jail for 1000 days. तो हमारा as media persons and as a citizen, one wonders कि ये जितने लोगों के ऊपर इतने कड़े UAPA और national security sedition, is Indian state become so weak? They are being threatened by students. Can Indian state fall apart by mere sloganeering by students, by mere gathering? What happened at JNU, what happens at other universities? तो अगर ये ठीक से चेक नहीं किया गया तो as democracy we will slip down. Already we are so much down in the World Index of Religious Freedom and Democracy. Human Development Index की तो बात ही छोड़ दो, we are very down. तो जस्टिस रमन्ना ने अभी बोला था, एक
this कहीं एक statement एड्रेस किया था 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं जिसमें से 87% तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 12% आर इन हाई कोर्ट. So that thing can change only when we adopt another method जो हमारा ancient था पंचायती system, so which Justice Ramanna has also talked about, alternative dispute resolution, ADR, mediation, कोर्ट तक पहुंचो ही ना आप, you should not reach the court. जैसे अशोक जी ने कहा कि बददुआ देते हो जा तो अदालत का मुंह देख. तो किसी को भी देखना हो, अगर suffering देखनी हो तो either you should go to the hospital or you should go to the court. And this is Indira was narrating that tragic tale of a young 22-year-old woman who lost her life and nothing has come about. Even after Nirbhaya, every day you will see some rape cases happening in Rajasthan, Madhya Pradesh, women being tortured, violence against women. तो एक ये जो हमने पहल की है, we hope कि आगे इस सीरीज में जो भी इनिशिएटिव होगा with like-minded organizations and individuals like Kachroo साहब और रैयानी जी जो कि एक महीने से हमारे साथ में टच में थे. So this is only the first step, but we can take it not at press club but at other forums also. Like Ashok ji has Supreme Court Lawyers Association with them, and there are bar associations across the country. So training of minds जो अशोक जी ने बताया वो भी बड़ा जरूरी है. Compassionate judge, और आजकल के जो यंग मजिस्ट्रेट्स जितने भी आ रहे हैं सबको बहुत ये कि उनके सीआर में लिखा जाता है कितने लोगों को कन्विक्ट किया, कितने केसेस डिसाइड किए, बिकॉज आई पर्सनली नो मेनी ऑफ दीज यंग मजिस्ट्रेट्स हु आर बीइंग ट्रांसफर्ड. इंदौर में देयर इज अ अशोक जी को ध्यान आएगा, अभी 3-4 दिन पहले या 10 दिन पहले अखबार में छपा था, वन एडिशनल सेशंस जज a lady 302 केस 302 का केस था, she gave 4 years or 5 years, she was sacked the next day by Madhya Pradesh High Court. So this is the quality of judges we are getting at sessions level. Then God save this time. और दूसरा कई सारे चीफ जस्टिसेस भी बोल चुके हैं, CJIs, we have proliferation of law schools. लाखों रुपए आप देते हैं अगर आप if your child studies in the national law school, any national law school, or private law colleges like Jindal Global University. The intention of setting up national law schools was that they will come and practice in the courts. But 90% of them, many justices have said they go to corporate or they take a flight abroad and settle for the cozy atmosphere in foreign land. So this mindset also has to change. Otherwise, नहीं तो you won't find lawyers like Ashok ji who are fighting or Indira ji who are fighting for underprivileged, who are those who can't afford justice. Justice has become unaffordable. So these are some of the एक और हबीब के इनिशिएटिव पे हमने यहाँ पे किया था, Delhi Legal Service Authority, they came here and अशोक जी के तो बड़े सारे चेले हैं उसमें DLSA में, and we offered them कि आप आइए प्रेस क्लब में अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए free of cost, and they came here, they spoke to us, additional session judge, magistrates, the campaign they carried out in last year they carried out for 45 days. So धीरे-धीरे है awareness, but it is not up to the level. But I am glad that Press Club could partner with Raiyani ji, and we should take it forward. And whatever we can do, we will do as Press Club of India. I thank Mr. Kachroo, Raiyani ji, Indira ji, Tiwari ji, Ashok ji, and all those who took time and pain to be present here. Thank you everyone.